anybody speaking, people? Is anybody speaking? I am not speaking yet, if that's what you're asking. I'm not. Thank you, sir. Okay, and I hope now everyone can see and hear and the rest. Mm. All right. Good afternoon, everyone. We were doing this yesterday. The last topic that we covered yesterday was constellations. What we had done earlier was looking into the topics that we were going to cover in this particular part. And we had studied the origin of the universe, where we went through the event of the Big Bang and, how first singularity existed and then Big Bang happened and how matter came to be. And from there, how the galaxies came to be formed, then the stars came to be formed, then the planets, and finally we came to the conception of the moon. Okay, how the moon came to be formed. All right. Later, we went on to study constellations. And I told you that there are 2 or 3 things that you need to remember very clearly about constellations. One is remember the one that is the largest, that is the smallest. The fact that it is not based on, it is simply a configuration imagined or assumed by individuals. Okay, there is no scientific basis for area or number of stars or angles or any math involved. Okay, we are not involving any kind of particular science in this. All right, other than mythology maybe, and that's not a science. You have to remember a few, especially the one that has Polaris, that is Ursa Minor. Ursa Minor carries Polaris. Okay, it's the brightest star in Ursa Minor. So that is an important, this one over here. Okay, this is an important star. And 2 pointer stars, Merak and Dubhe from Ursa Major, which point towards Polaris. Okay, if you see this line of Merak and Dubhe, if you follow this line, it will lead you straight to Polaris. So that is one interesting aspect of these constellations, one that we need to remember because it's associated with the Earth. Okay. Today, what we will try to cover is origin of Earth theories and try to look into the, sun a little. Let's try to look into the life cycle of the sun and, a few certain aspects of the sun. All right. Uh, you can't see even now. Can't you see the screen, Meenal? I am surprised if you guys can't see the screen yet because I'm sharing the screen. Let me know if you can't see the screen yet. If you still can't see the screen, because I can see the screen. If you cannot see the screen yet, you need to log out and log in again. Maybe that will work for you. It's visible, ma'am. It's visible? Okay, thank you. Yeah. Thank you. All right, okay. Moving forward. So here we are. Okay, we are studying the origin of Earth theories. We are going to try to understand. See, people, when the origin of universe has a single, well accepted, very popular theory, which we call as the Big Bang. Okay, that is the event, that is the Big Bang theory that we accept as the theory for the origin of the universe. Okay, now if you come to the origin of the Earth or the solar system, then these are multiple theories postulated by many multiple people, and we need to remember them. From the exam point of view, you need to only remember the name of the theory and the person who postulated it. Okay, you do not need to understand the basics and the mechanics of the theory. That is really not something that NDA exams, your NDA questions are never based on that. Okay, only once have I seen mentioned, somebody mentioned this particular thing, and that was also, along with Big Bang. See, which of these theories is used to describe the origin of the universe? ऐसे relation में मिला था मुझको. So clearly we are just going to, but I will explain those theories in short to you, just in case. Okay. So here are those origin of Earth theories. First was gaseous hypothesis proposed by Immanuel Kant. Second is nebula hypothesis proposed by Laplace. Both of these are pretty similar. Okay, ये दोनों काफी similar है theories. Then you have the planetesimal hypothesis by Chamberlain and Moulton, separately proposed किया था उन्होंने, थोड़े बहुत different से. Tidal hypothesis by James Jean and Harold Jeffrey. Binary star hypothesis by H.N. Russell. Supernova hypothesis by Fred Hoyle.
and interstellar dust hypothesis by Otto Schmidt. Okay, just remember the names and the people who proposed the names of the theories and the people who proposed them. All right, let's go to nebula hypothesis. ये नजर आ रहा है आपको nebula hypothesis side में? Okay, this is the nebula hypothesis. Okay, left hand side में. So ये एक nebula होता है. Okay, this is the beginning. We say that a nebula is a hot rotating disk of gas and dust. Okay, so this is the nebula, and what usually happens is that matter attracts other matter, right? Gravitation. So usually in the core of the nebula, you can see an accretion or an accumulation. And because of this accretion or accumulation over here, this core starts to get denser. Okay, it starts to attract more and more matter, so that the largest body in this nebula is usually formed at the core of the nebula. Okay, can you see? This is the largest body. You can see that it is starting to get denser over here in the first stage. In the second stage, you can see clearly that the core is becoming more and more dense, and it is getting a specific, a very accurate shape, a roundish shape. And now finally you have a body. Okay, एक सबसे बड़ा body जो है वो core में बनता है. And usually that is the star. Okay, that is the star or the sun. In our case it is the sun, but that is usually the star of a solar system. And then उसके बाद जो आपके उसके आजू बाजू जो है वो अभी भी एक रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट है, राइट? एक्सेप्ट कि उसमें अभी गैस थोड़ा सा कम है, लाइक एज अपोज टू द सन, एज अपोज टू द स्टार. सो उसमें भी मैटर का एक्रीशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है, एंड उसमें छोटे 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 प्लैनेटिस्मल्स बनना शुरू हो जाते हैं. ओके, एंड देन वो प्लैनेटिस्मल्स जब एक्रीट करते हैं, बड़े बड़े होते जाते हैं, तो उसके प्लैनेट्स बनते हैं, एंड देन दे हैव दोज वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, एंड so that you can see a very proper well configured solar system. Okay, at the end of the day ऐसा मिल जाता है आपको. So this process takes more than a lot, let's say millions of years. Okay, let's say a couple million years लेता है ये सब कुछ बनने के लिए, but this is how it happens. Okay, this is the nebula hypothesis. Gaseous hypothesis भी similar था. So nebular and gaseous hypothesis को describe करने के लिए हमने एक ही diagram use किया. The theory is similar. Okay, next you come to the planetesimal hypothesis. Okay, planetesimal hypothesis में हम assume करते हैं कि there is the sun. Okay, and then there is another star that is passing near the sun's orbit. Okay, there was another star which was passing around the sun's orbit. Now what happens is that when the star was approaching the sun, okay, ये star ऐसा उसका एक orbit होगा, right? कहीं ना कहीं. एक second ना. How did I forget this today? अरे हाँ, okay. See, let's say like this is the trajectory of the star. Okay, ये रहा उस star का trajectory. Okay, so when अब जब वो star से maybe इस तरफ कहीं होगा. Okay, so its gravitational attraction to the sun starts at this point. Okay, whenever it comes within the what do you say, sphere of gravitational attraction, तो वो वहां से gravitational attraction शुरू होता है. तो ये जो एक filament दिखाई दे रही है आपको, can you see this filament that is being drawn out of the sun? तो वो जो फिलामेंट है ना, उसमें से थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट टाइम बाहर आता है व्हेन द स्टार स्टार्ट्स टू अप्रोच द सन. ये स्टार जब इस पोजीशन पे होता है, सन को अप्रोच करने की कोशिश करता है, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसकी वजह से सन में से थोड़ा सा मटेरियल बाहर आता है. इट्स अट्रैक्टेड और ड्रॉन आउट ऑफ द सन, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फिलामेंट. ओके, वो फिलामेंट, पतला सा फिलामेंट का बिगिनिंग वहां से शुरू होता है. देन धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्टार अप्रोच करने लगता है सन को, ज्यादा करीब आता है सन के ऑर्बिट में भी, when the distance is reduced between them, the forces of gravitation are more and more, and hence the material drawn out for the sun from the sun also increases. Okay, and that is why finally जब जिस स्टेज पे वो सन एंड स्टार के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है, या उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है, तब आपको फिलामेंट का थिकेस्ट पार्ट मिल जाता है. ओके, देन द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द फिलामेंट इज ड्रॉन आउट, एंड देन उसके बाद अगेन द स्टार स्टार्ट्स टू गो अवे फ्रॉम द सन. ओके, वो थोड़ा सा सन से दूर जाने लगता है, एंड द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन रिड्यूस अ लिटिल, यू नो थोड़ा थोड़ा करके फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन रिड्यूस हो जाते हैं, एंड फाइनली आपको फिलामेंट का वो लीन एंड मिल जाता है. ओके, तो यू सी हाउ द फिलामेंट इज. ये फिलामेंट को ठीक से देख लीजिए. द फिलामेंट लुक्स लीनर टुवर्ड्स द एंड्स. वो जो एंड्स है उसके वो थोड़े से लीन है, एंड ये जो बीच का पार्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉड है. ओके, तो ये जो फिलामेंट, सिगार शेप्ड फिलामेंट बाहर निकला है, उसमें देख लीजिएगा कि एंड्स जो है वो थोड़े से लीन है, एंड बीच का पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड है, विच मीन्स कि बीच का पार्ट में द स्टार वाज क्लोजेस्ट टू द सन, एंड हेंस द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन वर द हाईएस्ट. ओके, और द लार्जेस्ट. ठीक है, that is the planetesimal hypothesis. Next you go to
टाइडल हाइपोथेसिस कंसिडर करते हैं। टाइडल हाइपोथेसिस में भी आपके पास ऐसा ही है कि एक सन है एंड एक स्टार है जो उसको अप्रोच कर रहा है। ओके, द सन इज, कैन यू सी द टाइडल हाइपोथेसिस? गुड। सो देयर इज दिस सन, ओके, एंड उसको अप्रोच करने वाला ये एक स्टार है। वो स्टार अपने ऑर्बिट से गुजर रहा है एंड व्हेनेवर जितना वो सन से क्लोज होता है उतना वो एक फिलामेंट ड्रॉ कर लेता है सन में से, एंड स्टार अपने रास्ते चला जाता है। फिलामेंट कीप्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, ओके, एंड उस फिलामेंट का फिर डिफरेंशिएशन होके उसमें फिर व्हाट यू से, उसमें फिर मैटर एक्रीट एंड एक्यूमुलेट हो जाता है एंड उसके प्लैनेट्स बनते हैं। ओके, दैट इज द जनरल आइडिया फॉर टाइडल हाइपोथेसिस। ओके, सिमिलर, वेरी सिमिलर टू प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट यू कम टू बाइनरी हाइपोथेसिस। नाउ दिस इज ग्रेट। बाइनरी हाइपोथेसिस में, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस में, बाइनरी है तो आप दो स्टार्स अज्यूम करते हो। अपार्ट फ्रॉम द सन देयर आर टू मोर स्टार्स इन प्ले, सो इन टोटल देयर आर थ्री स्टार्स इन प्ले। ओके, so ये रहा sun आपका। Okay, there is one companion star which has an orbit closer to that of the sun, and then there is an approaching star which has a large, which is farther away from the sun but closer to the companion star. Okay, so this is that approaching star, and approaching star थोड़ा सा बड़ा है। Okay, तो लेकिन थोड़ा सा दूर है, तो सन पे जो उसका ये है, व्हाट डू यू से, इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम होगा। ओके, इट इज अ लिटिल, सन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम होगा, कंपेनियन स्टार का थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, लेकिन इन दिस केस वी आर नॉट इवन कंसिडरिंग दैट द, वो जो फिलामेंट है जहां से हमारी सोलर सिस्टम बनी है, वी डोंट थिंक कि वो ओरिजिनेट हुआ था हमारे सन से। ये थियोरी प्रपोज करता है कि वो कंपेनियन स्टार से निकला था। ओके, देयर इज अनदर कंपेनियन स्टार विद द सन जो अपने रास्ते चला गया, अप्रोचिंग स्टार भी अपने रास्ते चला गया, लेकिन जब ये कंपेनियन स्टार एंड अप्रोचिंग स्टार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो ये यहाँ से ये फिलामेंट निकला बाहर। ओके, एंड देन while the companion star and the approaching star went on their way, this filament started to rotate around the sun because that was the major huge body around the sun at that time. Okay, this is the general idea for binary star hypothesis. Okay, the name is very suggestive itself, but I thought we should explain. चलो जी, सुपरनोवा हाइपोथेसिस। सुपरनोवा we all know, right? Supernova is the end stage of a star. जब बहुत बड़ा स्टार होता है, उसका बहुत बड़ा मास होता है, तो when the star dies, it is closer to its death. तो वो एक्सप्लोड करता है, उसका सुपरनोवा बनता है, एंड देन अगर वो उतना बड़ा साइज में रहा तो उसका ब्लैक होल भी बन जाता है। ओके, सो यहाँ वी आर सेइंग दैट देयर इज अ सन, एंड अज्यूम ये किया है कि सन है और उसके साथ एक कंपेनियन स्टार है। ओके, नोवा, जिसका फाइनली एक्सप्लोजन हो जाता है बिकॉज द स्टार डाइज, एंड उससे ये क्लाउड ऑफ, रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट मिल गया है हमको। ओके, अब सिंस वो स्टार एग्जिस्ट करना तो बंद कर दिया उसने, वो सुपरनोवा ने, सो क्लियरली ये जो गैशियस क्लाउड है दैट स्टार्ट्स टू रोटेट अराउंड द सन। ओके, जो सबसे बड़ा बॉडी है फिर वहां पे, सो दैट स्टार्ट्स टू रोटेट अराउंड द सन ओवर हियर, एंड देन इस गैशियस क्लाउड में से आपको डिफरेंशिएशन मिलता है, इट डिफरेंशिएट्स इनटू स्मॉलर एंड बिगर बॉडीज, एंड इस तरह से इसके अंदर प्लैनेट्स बनते हैं with well defined orbits later. Okay, so this is the supernova hypothesis. And lastly, you come to the interstellar dust hypothesis. Okay, अब interstellar dust hypothesis बताता है कि basically एक sun है जो एग्जिस्ट करता है, स्टार है अपना, इट एग्जिस्टेड फ्रॉम बिफोर, एंड देन उसके अराउंड ये इंटरस्टेलर डस्ट है। इंटरस्टेलर डस्ट मतलब स्पेस में जो अलग अलग बॉडीज होती है, तो उनके बीच में जो इंटरस्टेलर, उनके बीच में वो स्टार्स के बीच में जो स्पेस होती है, उसमें जो डस्ट है दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टेलर डस्ट। ओके, बहुत ज्यादा डेंस नहीं होती है बट होती है, एंड एनीवेज वो स्पेस इतनी बड़ी है कि क्या ही कर सकते हैं। सो वी हैव द इंटरस्टेलर डस्ट। तो ये जो डस्ट होती है उसका एक क्लाउड है, एंड उसमें फिर फाइनली मैटर एक्रीट होता है। देयर इज अ वेरी सिंपल वे दैट ऑल अज्यूम्स कि ये एक्रीशन एंड एक्यूमुलेशन पे होगा। ओके, कि बेसिकली उस क्लाउड के अंदर डेंसिटी के डिफरेंसेस होंगे, कहीं ज्यादा मैटर होगा कहीं कम मैटर होगा। जहां पर ज्यादा मैटर है वो sorry, जहां पर ज्यादा मैटर है वो वो और ज्यादा मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, सॉरी, so it will try to attract more and more matter towards itself. All right, and in this way, huge pockets of density will start to form. Okay, there will be pockets of great density and there will be pockets of less density. So these pockets of great density will try to attract more and more matter towards themselves, and
in the process of accretion and accumulation, they will form bodies. They will start to form larger bodies. Okay. Now these larger bodies usually now these smaller large bodies will also collide among each other, and then they will also accrete and accumulate, thus leading to the formation of planetesimals. And then these planetesimals grow bigger in size once again from accumulation and accretion of more matter, and that will eventually lead to the formation of planets. Okay. दिस इज द जनरल आइडिया. ये हम हर चीज में अज्यूम करते हैं कि डेंसिटी के डिफरेंसेस होंगे, फिर जहां पे ज्यादा मैटर होगा वो और मैटर को अट्रैक्ट करेगा, एक्रीशन एंड एक्यूमुलेशन होगा मैटर का, जिसकी वजह से थोड़ा सा बड़ा बॉडी बन जाएगा, फिर वो जाके किसी और के साथ कोई और छोटी बड़ी बॉडीज के साथ कोलाइड करेगा और बड़े बड़े एक्यूमुलेशन हो जाएंगे मैटर के, और इस तरह से प्लैनेटिस्मल्स बनेंगे, और फिर और ज्यादा मैटर एक्यूमुलेट करने के बाद वो और बड़े होकर प्लैनेट्स बन जाएंगे. ओके, दैट्स द जनरल आइडिया. एंड रिमेम्बर, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं अभी व्हेन वी गो ऑन टू सी, तो वो यूजुअली स्टार्स जो होते हैं वो कंप्लीटली गैस से बने पड़े हैं. ओके, बिकॉज स्टार्स को चलने के लिए, फॉर द स्टार टू सर्वाइव और रादर लिव, उसकी लाइफ साइकिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी मिलती है, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए हाइड्रोजन का ह्यूज सप्लाई होना बड़ा जरूरी है. ओके, सो द स्टार नीड्स टू हैव अ वेरी ह्यूज सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन फॉर इट टू इवन वर्क एज अ स्टार. ओके, कि अभी हमारे लिए कैसे हमारी बॉडी एंड उसका जो ऑर्गन सिस्टम्स है अलग अलग, वो इंपॉर्टेंट है, राइट, फॉर इट टू फंक्शन, राइट, वी नीड ऑक्सीजन टू लिव. तो ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है. तो वैसे ही स्टार को जीने के लिए उसका उसका बेसिक काम क्या है स्टार का, कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे. तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होना जरूरी है. एंड फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन टू अकर, there have to be hydrogen atoms, four hydrogen nuclei for them to combine and form a helium nucleus, right? So this needs to be, the star is essentially made up of gases. Okay, hydrogen and helium से बने होते हैं stars. स्पेस भी अक्सर इसी से बनी पड़ी है. आपके मोस्टली स्पेस में आपको हाइड्रोजन गैस ही सबसे ज्यादा मिलता है, followed by then helium and a little oxygen and a little nitrogen and so on and so forth. Okay. All right. Now we come to the solar system. I am assuming that if you have any questions at all, you will ask me that in the chat. I'll keep looking at the chat time and time again. Let's see how this works. Okay. चलो जी, सोलर सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं. सोलर सिस्टम से पहले ना हमको सन को पढ़ना पड़ेगा. व्हाट इज द सोलर सिस्टम? देयर इज द सन. ओके, this is not a happy picture for me, this is a happier picture for me. Okay, let's consider this. So there is this sun over here, you can see. Okay, please, हमने एक छोटा सा section लिया है उसका. Okay, solar system का. You know how the solar system looks, right? It's a concentric circle से बना हुआ चीज है वो. So we are saying ये sun है जो center में होता है. फिर वहां से निकलते हैं आपके सारे planets, Mercury, Venus, Earth, Mars. There is the asteroid belt between Mars and Jupiter, and then you have the Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, फिर उसका एक्सटेंट आगे होता है. ओके, तो अभी ना सबसे पहले हम सन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, सन खुद. ओके, द सन इटसेल्फ स्टार है. इट इज द बेसिस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम. ओके, वो सन है, जब तक सन है तब तक हमारे प्लैनेट्स है. अगर हमारा सन नहीं रहा तो देयर इज नो रीजन फॉर द सोलर सिस्टम टू एग्जिस्ट एज इन लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द सोलर सिस्टम, हमारे प्लैनेट पे स्पेशली. ओके, then you come to the अभी सन के भी हम डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं. ओके, देयर इज द हीलियोस्फीयर. सोलर सिस्टम में एक हीलियोस्फीयर कंसिडर करना पड़ता है. सी, दिस इज द सन. ओके, ये रहा हमारा सन. ऑलराइट, अभी सन का जो हाउ डू यू से आउटर एटमॉस्फेयर होता है ना, सबसे आउटर एटमॉस्फेयर है जो आपको दिखाई देता है सिर्फ एक्लिप्सिस में, उसको बुलाते हैं करोना. ओके, इट इज कॉल्ड एज करोना. शुड आई टाइप इट आउट? मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको, राइट, इट इज कॉल्ड एज करोना. तो वो जो सन का आउटर मोस्ट एटमोस्फियर है, दैट इज कॉल्ड एज करोना. ओके, सन का जो सरफेस होता है, द सरफेस ऑफ द सन, जो हमको यूजुअली दिखाई देता है, जो विजिबल होता है व्हेन वी लुक एट द सन, व्हाट वी आर एसेंशियली सीइंग इज द फोटोस्फियर. ओके, उसको बुलाते हैं फोटोस्फियर. वो जो सन का विजिबल सरफेस है, दैट गेट्स कॉल्ड एज द फोटोस्फियर. ओके, एंड वो सन के एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से जो हाई टेम्परेचर आयोनाइज्ड गैस एग्जिस्ट करता है सन के एटमॉस्फेयर में, उसको, उसका जो आउटर पार्ट है उसको हम कोरोना बुला रहे हैं. ओके, तो वो जो प्लाज्मा, वो जो कोरोना है वो एसेंशियली उस सारे प्लाज्मा से बना है, वो हाई टेम्परेचर आयोनाइज्ड गैस जो है उससे बना है वो. ओके, सो अब ये क्या होता है ना, ये जो सन है इसमें से ये जो कोरोना है ना, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होने की वजह से वो जो प्लाज्मा है, द आयोनाइज्ड गैस, तो उसमें के जो बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर जो एटम्स होते हैं ना,
they will give off electrons, okay, वो electrons दे डालते हैं। तो इसका जो कोरोना है उसमें से constantly what is coming out is a steady stream of free electrons and positively charged ions, okay। तो charged ions, positively और negatively charged ions constantly वो sun से हर direction में बाहर जा रहे हैं, okay, they are going out in every direction from the sun, okay। तो वो जो इसको हम कहते हैं solar winds, ये जो constant steady stream है of ionized particles which are coming out from the sun, from the outer surface of the sun, तो उसको हम बुलाते हैं सोलर विंड्स, ओके, दोज आर कॉल्ड एज सोलर विंड्स। अब ये जो सोलर विंड्स होते हैं ना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस जहां तक रहता है दैट इज कॉल्ड एज द हीलियोस्फीयर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ओवर हियर, ओके। ये दिखाई दे रहा है आपको, कैन यू सी दिस ओवर हियर, हीलियोस्फीयर, हाँ, उसका एक्सटेंट दिखाई दे रहा है आपको अच्छा खासा, यहाँ तक। Let's say this is the extent, okay। तो ये जो extent होता है around the sun, completely around the sun, this is called as the heliosphere। वो एक bubble जैसा exist करता है around the sun, जिसमें sun का magnetosphere, sun का atmosphere सब कुछ contained है, okay। So and वो solar winds का influence है। तो ये जो heliosphere है that is always constantly influenced by the solar winds from the sun, okay। ये जो constant flow of charged particles आता है sun से, उसकी वजह से, okay। नेक्स्ट स्टेप जो है उसके बाद होता है एक छोटा सा हीलियोपॉज, ओके, देयर विल ऑलवेज बी अ हीलियोपॉज नेक्स्ट, आफ्टर द हीलियोस्फीयर देयर विल बी अ हीलियोपॉज। अब ये हीलियोपॉज जो है ना, इट इज द बाउंड्री ऑफ द हीलियोस्फीयर, ओके, वो हीलियोस्फीयर का जो बाउंड्री है उसको हीलियोपॉज बुलाते हैं, ओके। एंड वो शेप जो होता है इस बाउंड्री का वो फ्लक्चुएट करता है, अगर सोलर विंड्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है तो इट विल बी पुश्ड आउटवर्ड फ्रॉम द सन, ओके, दैट हीलियोपॉज, वो जो बाउंड्री का शेप है, इट विल बी पुश्ड आउटवर्ड फ्रॉम द सन। अगर सोलर विंड्स उतने स्ट्रांग नहीं है, अगर इंटरस्टेलर मीडियम का प्रेशर थोड़ा स्ट्रांग है, तो फिर द बाउंड्री विल बी पुश्ड इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सन, ओके, समझा। दिस इज द हीलियोपॉज। रिमेंबर द टर्म्स, मैंने once again to clarify, I have never seen these terms being asked in the paper, but then UPSC is known to be unpredictable, right? So we are just getting familiar with the terms, all right। फिर जो नेक्स्ट चीज है ना, ये रहा आपका, यू कैन सी दिस राइट, हीलियोपॉज, यहाँ तक हीलियोस्फीयर का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है आपको सन का, and then this is the heliopause, okay। अब within this part also you will have this, within the heliosphere आपको एक Kuiper belt करके मिलता है, okay। Read the spelling over here, it is called as Kuiper belt, Kuiper, Kuiper belt, okay। ये क्या होता है ना, सन के अराउंड एक सर्कमस्टेलर डिस्क है, ओके, सन के अराउंड एक ऐसा ऑर्बिट जैसा एक डिस्क जैसा है, which will extend from नेपट्यून के ऑर्बिट से आगे कुछ 30 to 50 AU तक AU तक एग्जिस्ट करता है, ओके, फ्रॉम द सन। सो वी आर सेइंग कि दैट इज द काइपर बेल्ट, ओके। ये काइपर बेल्ट की खासियत ये है कि इसमें ना हमको ड्वार्फ प्लैनेट्स मिल जाते हैं, प्लूटो, हामिया, माके। तो ये जो सारे प्लैनेट्स है ये हमको इसमें मिल जाते हैं, ओके, ड्वार्फ प्लैनेट्स। वी आर नॉट सेइंग बिग प्लैनेट्स, वी आर सेइंग ड्वार्फ प्लैनेट्स। जो प्लैनेट बन सकते थे, बने नहीं, साइज बड़ा है, उसको कुछ और करके क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो वी आर कॉलिंग देम ड्वार्फ प्लैनेट्स, ठीक है। Similar structure to planets, but they are simply not big enough to be classified as a planet. All right, not just big enough, उनके orbits भी वैसे नहीं है। So there are some 3 to 4 criteria for being classified as a planet. They don't fit into that criteria. इसलिए उनको dwarf planets बुलाते हैं। Okay, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है जिसको कहते हैं, उसी काइपर बेल्ट का नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है, उसके बाद वाला जो सर्कमस्टेलर डिस्क है, उसको बुलाएंगे स्कैटर्ड डिस्क। यू सी दिस इज द काइपर बेल्ट, यहाँ पर काइपर बेल्ट है और यहाँ पर आपका स्कैटर्ड डिस्क आता है, ओके। वंस अगेन अनदर कॉन्सेंट्रिक डिस्क अराउंड द सन। तो अभी इस स्कैटर्ड डिस्क में आपको क्या नजर आ रहा है, once again Eris नाम का एक dwarf planet मिलता है, okay। You will find the dwarf planet called as Eris, and you will also find short comets, short period comets जो होते हैं ना, वो मिल जाते हैं आपको। short period comets is वो जो 200, 250, 300, 400 साल नहीं ले रहे, वो हैलीज कॉमेट जैसे कॉमेट्स, छोटा सा 75 years का एक ऑर्बिट होता है, वो कंप्लीट कर जाते हैं, फिर हमको वापस नजर आते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स आपको यूजुअली स्कैटर्ड डिस्क में मिलते हैं। काइपर बेल्ट जो है, इट इज कंसिडर्ड एज दी, काइपर बेल्ट में हम मानते थे कि हमारे थोड़े बहुत सेंटोर्स वगैरह निकले थे एंड ऑल, थोड़ा लाइक ओरिजिन उनका वहां पे था, ऐसे हम मानते हैं। अभी ज्यादा मिलते नहीं है हमको वहां पे काइपर बेल्ट में, ओके, ठीक है। एंड देन देयर इज ऑफ कोर्स द इंटरस्टेलर मीडियम जो यहाँ हीलियोस्फीयर के, हीलियोपॉज के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो वो इंटरस्टेलर मीडियम इज ऑल द मैटर एंड रेडिएशन, राइट। इट इज द रेडिएशन ऑल्सो, ओके। इट इज नॉट जस्ट द डस्ट, इट इज ऑल्सो द रेडिएशन that exists in the space between the star systems of a galaxy। between the stars जो भी matter and radiation exist करता है, उसको हम interstellar medium बुलाते हैं, okay, usually outside of a solar system।
एंड देन देर इज द ऊट क्लाउड। इसी इंटरस्टेलर मीडियम में आपको ये वाला डिस्क नजर आ रहा है, दिस डिस्क, कैन यू मेक आउट दिस डिस्क ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज द ऊट क्लाउड। ओके, ऊट क्लाउड थोड़ा सा दूर है सन से, सो ऑब्वियसली इसके अंदर जो सेलेस्टियल बॉडीज होंगे दोज आर आईसी प्लैनेटिस्मल्स वगैरह, जो सन के अराउंड, बड़े बड़े प्लैनेट्स नहीं है, छोटे छोटे प्लैनेटिस्मल्स हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, सो दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, अभी ये सोलर सिस्टम को ठीक से देख लीजिए। हमको हम वी नो वेरी वेल दैट देयर इज द सन, ओके, एंड द all these 8 planets are orbiting around the sun. Okay, the closest to the sun are Mercury, Venus, Earth, and then Mars. Okay, these planets are called as the inner planets or the terrestrial planets. The reason why they are called inner, because they are closer to the sun. Terrestrial because they are similar to Earth. Okay, Mercury, Venus, Earth, and Mars are similar to Earth in many ways. So like you know, the structure is very solid and so on so forth, थोड़े से dense होते हैं, you know, gases थोड़े से कम है, atmospheres are है या नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा, you know, it is not completely made up of gases, ऐसे नहीं है वो planets, solid है वो। so ये जो होते हैं वो earth के जैसे है थोड़े से, so these are called as terrestrial planets, Mercury, Venus, then Earth, and then Mars. Okay, now between Mars and Jupiter there is a clear distinction. Okay, जिसमें एक एस्टेरॉइड बेल्ट होता है। एस्टेरॉइड बेल्ट इज वंस अगेन बेल्ट है, अभी आपको ऐसा यू नो वन टू डिमेंशनल नजर आ रहा है, ये वन डिमेंशनल, लेकिन दिस इज रियली टू डिमेंशनल, लेकिन ये वैसा नहीं है। इट इज क्लियरली अ थ्री डिमेंशनल स्पेस, देयर इज अ प्रॉपर डिस्क जैसा, एक सर्कमस्टेलर डिस्क जैसा एक पीस है वहां पे, जिसमें एस्टेरॉइड्स ऑर्बिट करते हैं, ओके, अराउंड द सन। तो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो रॉक एंड अर्थ से, प्लैनेट से सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उसका। ओके, रॉक एंड मेटल से बने होते हैं। भी हम मानते हैं कि वो कभी प्लैनेट्स का पार्ट हुआ करते थे या हो सकते थे, बट दे डिड नॉट एवर जॉइन द प्लैनेट, डेब्रीज का पार्ट है, सो इसलिए उसके एस्ट्रॉइड्स बनते हैं। वो यूजुअली एस्ट्रॉइड बेल्ट में रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एस्ट्रॉइड बेल्ट में रहते हैं, यहाँ वहां भी मिल जाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल बाजू में वो जुपिटर है ना, उसकी ऑर्बिट में भी मिल जाते हैं, यू एक्चुअली फाइंड एस्ट्रॉइड्स विद इन द ऑर्बिट ऑफ द जुपिटर, दे आर कॉल्ड एज ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। ओके, ट्रोजन वायरस की तरह, सो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स बुलाते हैं उसको। सो वहां पे भी आपको दूसरी जगह पे भी मिल जाते हैं, बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेस टू फाइंड देम। ओके, प्राइमरीली वो आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलते हैं एस्ट्रॉइड्स। ओके, एस्ट्रॉइड्स कभी कभी अर्थ के पास भी आते हैं, अर्थ के ऑर्बिट के करीब भी आते हैं, एंड दैट कैन बी वेरी स्कैरी बिकॉज देन यू नो इट कैन कम एंड you know, it can cross the orbit of the earth and fall on the earth and so on and so forth. It can be a scary thing to happen. Okay, so we are saying कि asteroids, this is the asteroid belt which usually contains the asteroids. उसमें आपको एक और dwarf planet मिलता है, ऊपर नजर आ रहा है आपको, Ceres. Okay, this is the dwarf planet that you find there, Ceres, Ceres. ये सारे dwarf planets में pretty छोटा माना जाता है। Okay, it is pretty small over there, साइज वाइज वो सबसे छोटा है। ओके, एंड देन फॉलोड बाय, उसके बाद आफ्टर द एस्ट्रॉइड बेल्ट यू हैव द आउटर और जायंट प्लैनेट्स। ओके, आउटर प्लैनेट्स बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द सन, जायंट बिकॉज उनका साइज बहुत बड़ा है। ओके, दे आर रियली ह्यूज इन साइज, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, दीज आर योर 4 आउटर प्लैनेट्स। अभी जुपिटर एंड सैटर्न जो है वो हाइड्रोजन हीलियम से बने हैं ज्यादा करके, मोर ऑफ इट इज देयर, एंड यूरेनस एंड नेपच्यून जो है वो अमोनिया या फिर मीथेन वगैरह से बने हैं। ओके, सो लाइक यू विल फाइंड दैट मोर ओवर देयर इन कॉन्सेंट इन प्रोपोर्शन ऑन दीज प्लैनेट्स। ओके, सो ये रहे आपके 4 आउटर प्लैनेट्स या जायंट प्लैनेट्स। ओके, इनको एक और नाम है, फेमस नाम है आउटर या जायंट प्लैनेट्स को, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जोवियन प्लैनेट्स। Okay, उनको जोवियन planets भी बुलाते हैं, and the reason why they are called as Jovian planets is because these planets are similar in nature to Jupiter. तो Jupiter का adjective hence Jovian. Okay, तो they are similar in nature to Jupiter, so वो Jovian planets होते हैं। Okay, now next we discuss the Kuiper belt, जिसमें हमको ये बाकी के 3 ये मिल जाते हैं, dwarf planets मिल जाते हैं, Pluto, Haumea and Makemake. Okay, these 3 dwarf planets that you find there. And then उसके बाद Pluto being the largest of the dwarf planets, अर्लियर जब हमको ये 4 ही पता थे, प्लूटो हमारा प्लैनेट हुआ करता था, तब तक हम एरिस को सबसे बड़ा डॉर्फ प्लैनेट मानते थे। फिर उसके बाद प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा तो वो डॉर्फ प्लैनेट्स में सबसे बड़ा बन गया। ओके, थोड़ा सा ही बड़ा है एरिस से साइज में, बट है तो सही, वो है तो सही डॉर्फ प्लैनेट। ओके, एंड देन स्कैटर्ड डिस्क में आपको एरिस एंड शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स मिल जाते हैं, देन यू कम अक्रॉस द हीलियोपॉज, एंड लास्टली यू विल गो टू द ऊट क्लाउड। ओके, अब
ऊट क्लाउड में स्कैटर्ड डिस्क में आपको शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स मिल रहे हैं, वैसे ऊट क्लाउड में आपको लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स मिलते हैं. ओके, सेंटोर्स मिल जाते हैं. एंड यूजुअली जितने भी जितना दूर आप सन से जाएंगे ना, उतने आईसी बॉडीज मिलना ज्यादा ये हो जाता है. लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आईसी बॉडीज इज मोर. ओके, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर एंड सैटर्न के भी टेम्परेचर्स कुछ ज्यादा ग्रेट नहीं है, ऐसे कम ही होता है. यूरेनस एंड नेपट्टून के तो डेफिनेटली कम है. तो ये कॉमेट्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पर स्कैटर्ड डिस्क में जो मिल रहे हैं, वो तो सिर्फ डस्ट और आइस से बनते हैं ना. तो जब वो ऑर्बिट करते हैं सन को, व्हेन दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, जब वो सन के करीब जाते हैं थोड़ा सा, तो व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद हीट एंड लाइट, तो तब जाके उनका जो वाटर आइस जो होता है वो थोड़ा सा वेपराइज हो जाता है. देन वो कॉमेट की जो टेल होती है ना, टिपिकल, रिमेम्बर हाउ द कॉमेट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक इट हैज अ लॉन्ग टेल. तो वो वाला जो टेल होता है वो तब जाके मिल जाता है बाय प्रॉक्सिमिटी टू द सन. ओके, हीट की वजह से वेपराइज हो जाएगा वो, एंड आइस, एंड देन उसकी वजह से आपको वो टेल मिल जाता है. ओके, ब्लूइश कलर का टेल दिखाई देता है आपको. एंड देन जहाँ ऊट क्लाउड में आपको लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स मिलते हैं, एंड देन सेंटोर्स मिलते हैं. ओके, सेंटोर्स की स्कीम ये है कि हम इमेजिन करते हैं सेंटोर्स कैसे होते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वी हैव एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ सेंटोर्स. स्पेस में आपको कोई एक्चुअल सेंटोर का पिक्चर नहीं मिला है. सेंटोर्स की खासियत ये है कि सेंटोर्स, I hope you know that there are mythological creatures called as centaurs, half human half horse. Okay, ऐसे मिथोलॉजी में, ग्रीक मिथोलॉजी में एक सेंटोर करके एनिमल हुआ करता था, एनिमल या क्रीचर हुआ करता था, हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स. If you have seen Harry Potter movies, you've seen those centaurs over there. Okay, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के टर्म्स में सेंटोर्स जो होते हैं वो हाफ एस्टेरॉइड्स की तरह होते हैं, हाफ कॉमेट्स की तरह होते हैं. उनका जो स्ट्रक्चर है या जो मेकअप है, दैट इज लाइक एस्टेरॉइड्स. ओके, डस्ट एंड सॉरी रॉक एंड मेटल का ये होता है उसका. तो कॉम्पोजिशन एस्ट्रॉइड्स का होता है उसका, लेकिन बिहेवियर जो होता है वो कॉमेट्स की तरह होता है. ओके, उनके बहुत अनस्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं. सो सेंटोर्स जो होते हैं, दे आर लिटिल, हाउ डू से, वो थोड़े से रेयर थिंग्स है हमारे स्पेस में. ओके, मतलब वी डोंट नो अ लॉट अबाउट द सेंटोर्स. लेट्स गो देयर. ओके, ठीक है. अभी यूजुअली हमको वो यहाँ मिला करते थे, ऊट क्लाउड में मिला करते थे. हम मानते हैं कि उसको हम काइपर बेल्ट या ऊट क्लाउड में रहा करते थे वो. बट देन नाउ वी नो वेरी वेरी क्लियरली कि हमको आजकल वो सबसे ज्यादा इन दोनों के इसमें मिलते हैं. नेपच्यून एंड जुपिटर जो है उसके बीच में जो स्पेस है, वहां पर वो यूजुअली ऑर्बिट करते हैं सेंटोर्स. ओके, सो दिस इज वेरी फाइन सेंटोर्स यूजुअली. ठीक है, चलेगा. इज दिस क्लियर? You have, I hope you have understood what the solar system looks like, and what are the various parts of the solar system. We haven't covered all the planets and the unique characteristics of each planet yet, but you should have a general idea of the positioning of the planets and the characteristics that come with the position of the planets. Like inner planets की कुछ typical characteristics होते हैं, outer planets के कुछ अलग characteristics होते हैं. उनको गैस जायंट्स क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनका मोस्टली गैस का मेकअप है. ओके, एवरीथिंग इज, दे आर मेड अप ऑफ गैस मोस्टली. ऑलराइट, सो दिस इज यूजुअली हाउ इट वर्क्स. आई थिंक आई हैव कवर्ड दैट नाउ. Oh, sorry, somebody is asking me something. क्या? What questions will be asked based on this? Um, maybe something like which is the largest dwarf planet, or which of these is not a dwarf planet, or which of these dwarf planets is found in the asteroid belt. तो मैंने आज तक कभी इसके ऊपर questions नहीं देखे. I have never seen anybody ask you in UPSC, in NDA exams, about the Kuiper belt or the Oort cloud. I'm just giving this out. I'm just giving this information out because for years we assumed that they will not ask you certain questions, and then UPSC started delving into those topics as well. So just not taking risks. Let's say that we are not taking risks, any more risks over here. Okay. Now we come to the life cycle of the sun. After we are done with this topic, we will go through all the questions that UPSC has asked you before based on this topic. Okay. Then you'll get an idea of what sort of questions UPSC asks you. All right. Like we said, we are looking at the life cycle of the sun. Okay. तो हमारा जो सन है, रिमेम्बर मैंने आपको कल कहा था कि नेबुलास जो होते हैं, they are called as the nurseries of stars, क्योंकि it is considered as the birthplace of stars. Okay, so nebula जो होता है, that is once again a hot rotating disk of gas and dust. Okay, so ये जो nebula होता है, I think I have a picture here.
हाँ, सी दिस इज द पिक्चर ऑफ नेबुला। वी वर सेइंग कि ऐसा नेबुला होता है, इट्स अ हॉट रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट। यूजुअली उसमें सेंटर में कोर में मैटर एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्रीट हो जाता है, एंड देन वहां पे एक स्टार का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। Okay, that is usually where the star starts to form. So this is the protostar stage. Okay, protostar meaning sun का जो basic, sun मतलब star का जो basic formation है वो यहाँ पर होता है. Okay, protostar. Then उसके बाद this is the next stage where you come. This is called as the main sequence stage. Okay, मेन सीक्वेंस, सी पीपल, प्रोटोस्टार जो है तो इट इज जस्ट हाइड्रोजन। जब नेबुला था तो बस हाइड्रोजन एंड हीलियम यहाँ वहां बिखरा पड़ा था। ओके, फिर प्रोटोस्टार में वो हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है दैट हैज नाउ गैदर्ड एट द कोर, मोर इन द कोर। ओके, एंड देन देयर इज स्टिल द डिस्क अराउंड इट। देन ये यहाँ पर जब मेन सीक्वेंस है ना, तो मेन सीक्वेंस में द सन, आवर सन करंटली इज इन द मेन सीक्वेंस स्टेज। ओके, तो ये जो मेन सीक्वेंस स्टेज होता है इसमें अभी वो जो स्टार होता है वो अभी सब लाइक इट इज एट द पीक नाउ, इट इज बर्निंग हाइड्रोजन मतलब नॉट रियली बर्निंग, इट इज कंबाइनिंग हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। लेकिन वो इट इज यूजिंग अप द हाइड्रोजन। ओके, इन द कोर, कोर में जो हाइड्रोजन होता है उसके, उसको वो सबको यूज करने लगता है, सबसे ज्यादा यूज कर रहा है वो उसको। ओके, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द मेन सीक्वेंस स्टेज, राइट। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि वो जो हीलियम होता है ना उसका वो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा यूज होने लगता है, तो हीलियम जो होता है वो उसका उसका ज्यादा मेजोरिटी हो जाता है एंड उसका कोर बन जाता है। एंड हाइड्रोजन का जो शेल है वो उसके बाजू में बनने लगता है। ओके, हाइड्रोजन का शेल बाजू में बनने लगता है, हीलियम का कोर बन जाता है। ओके, तो उस स्टेज पे इसको कहेंगे, यू नो, it is closer to being the red giant now. Okay, now the star is being closer to the red giant. What really makes it the red giant, what the last step in being a red giant is, दैट वो एक अभी वो जो अंदर की तरफ, बिकॉज वो सारा हीलियम एंड यूजुअली क्या हो जाता है आफ्टर दैट, आफ्टर द हाइड्रोजन इज यूज्ड अप, स्टार के पास एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो स्टार अभी हीलियम एटम्स यूज करना शुरू कर देगा। ओके, तो व्हाट इट डज इज इट ट्राइज टू यूज अप, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, वो हाइड्रोजन की लैक में वो तीन हीलियम एटम्स यूज करता है, प्रोसेस को ट्रिपल अल्फा प्रोसेस कहते हैं। तीन हीलियम एटम्स यूज करता है और उनको फ्यूज करके वो एक कार्बन एटम बनाता है। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जब सन पीक पीरियड में था, जब वो मेन सीक्वेंस में था, तो वो हाइड्रोजन एटम्स यूटिलाइज कर रहा था। हाइड्रोजन एटम्स को यूज करके इट वाज मेकिंग हीलियम न्यूक्लियाई। ओके, चार हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को इस्तेमाल करके हीलियम न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा था, एंड उसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, human beings have been after this process for a very long time because we also need to produce energy. So we say okay, so that is the main sequence stage. फिर उसके बाद the hydrogen is used up, so now it starts to use up the hydrogen का helium का core बन जाता है और hydrogen का shell बन जाएगा। okay, hydrogen बाहर की तरफ shell में आ जाएगा। in this stage there is the hydrogen shell outside and this is the helium core inside। okay, now it starts to utilize, now there is no hydrogen atoms, no hydrogen nuclei to utilize, so now it will focus on the star will focus on the helium nuclei। okay, फिर वो तीन हीलियम न्यूक्लियाई को कंबाइन करके एक कार्बन एटम बनाता है। थोड़ी कम अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है लेकिन एनर्जी रिलीज जरूर होती है। ओके, ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रिपल अल्फा प्रोसेस। एंड उस चक्कर में क्या हो जाता है कि अभी उसका जो कोर है वो कार्बन से बन जाता है एंड बाहर हाइड्रोजन का ऑन्वेलप आ जाता है। ओके, देयर इज अ हाइड्रोजन शेल अराउंड इट एंड बीच में कोर मटेरियल इज कार्बन। ओके, अभी कार्बन से तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पर स्टार फाइनली बोलता है ओके ठीक है, देयर इज नो वे ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी, एंड देन द स्टार कोलैप्सेस। ओके, in our case this star will end up being a white dwarf. Please remember the end stage of the sun, ये पूछा जाता है आपको कि what will our sun end up as, तो our sun will end up as the white dwarf। okay, हमारे सन का उतना मास नहीं है कि वो नोवा सुपरनोवा वगैरह बन जाए, ठीक है, या ब्लैक स्टार सॉरी ब्लैक होल वगैरह बन जाए, that is not going to happen to our sun। okay, our sun will form a white dwarf because it doesn't have enough mass। okay, इतना बड़ा मास नहीं होगा, एंड देन बहुत लेटर ऑन कभी तो मे बी यू नो इट विल टर्न इनटू अ ब्लैक डॉर्फ। हमारा यूनिवर्स इतना पुराना नहीं है कि हमारे पास ब्लैक डॉर्फ्स हो। ओके, सो अभी तक हमको कोई ऐसे ब्लैक डॉर्फ्स नहीं मिले, द यूनिवर्स इज जस्ट नॉट ओल्ड इनफ टू फॉर्म अ ब्लैक डॉर्फ, लेकिन विद इनफ पैसेज ऑफ टाइम it will finally transform into a black dwarf, but the end stage is going to be a white dwarf। please remember, the end stage is a white dwarf। ठीक है, are you clear people, is this good enough? कल हम देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ दिस स्टार्स।
क्योंकि एक बार पढ़ लेते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बट दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ इट. ओके, ये हमारे सन का लाइफ साइकिल है. Starts as a protostar. Currently it is in the main sequence stage, then it will move on to the red giant stage where it will form a carbon core and it will have hydrogen envelopes or hydrogen shells around it. Okay, and it will end up as a white dwarf. White color का picture भी याद कीजिएगा, white dwarf करके end करेगा. Okay, thank you very much for joining me. Do you have any questions? No, you don't have any questions. All right, no problem. You guys have a great day. Bye bye. See you.